Welcome everyone. Welcome to Networkerr. So in this particular session, we are going to continue our PCNS series. Okay. In our PCNS series, we are previously discussing about how we are deploying in VUR mode, how we are deploy our PA inside in VUR deployment model. After that, we are discussing about layer 2 and layer 3 deployment model, and we are also create a session related to, and also we are uploading the concept like natting. Okay, inside natting, if I am talking about something depth in natting, so inside natting there are four kind of natting inside Palo Alto networks. Like one is S NAT, which is nothing but your source NAT. Another one is D NAT, which is nothing but your destination NAT. And there was a U-Turn NAT. Okay, there was a dual NAT. Okay, so previously we are discussing about S NAT, like source NAT. Inside source NAT we are studying three flavors actually. One is static, dynamic, and NAT overload, which is nothing but port address translation. And in DNAT we are also covering the three flavors like static, dynamic, and port forwarding. So today we are discussing about U-Turn NAT, how U-Turn NAT is actually working. So this particular session is actually 100% practical. We are not covering the theoretical concept, but let me told you some concept related to the U-Turn NAT. Actually DNAT is nothing but whenever we are accessing our private server using public IP address. So it is nothing but we are accessing our private server using public IP address. Let me show you the actual diagram. So that's how it looks like. This is my WAN segment. As you can see, this is my LAN segment. Let me change my pen color. This is my LAN zone, and this is my LAN system 10.0.0.10, which is connected to a L2 switches, and this L2 switch connected to my PA. Okay, and this is the gateway of that particular LAN subnet. Okay, and there is a management PC. I am connecting towards my PA management interface to manage this PA. Okay, and there is a DMZ zone. Inside DMZ zone there is a Facebook server. I am taking Facebook server. You can consider any kind of server like local server or like on demand servers. Okay, so this is a Facebook server which IP address is 192.168.80.100, and this is the gateway connected to the PA. And also PA is connected to my WAN interface, also known as public zone, and this is the public IP address connected to P. And there is a router, and this is a ISP router. You can say this is a ISP router. Inside ISP router there is a public user, and also there is a external user. Okay, so what we are actually trying to do, I am accessing this private system is accessing this Facebook server but public IP address. So normally whenever we are talking about U-Turn NAT is basically used whenever you in your organization you have not your any kind of internal DNS. सो ये नॉर्मली कहाँ यूज होता है, जहाँ पे लेट्स से मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरी खुद की डीएनएस नहीं है. अगर मेरी खुद की डीएनएस होता सो मैं अपनी डोमेन को रिजोल्व कर पाता. ओके, लेट्स से facebook.com, उसके लिए जो आईपी एड्रेस है 192.168.80.100 है. ये मैं तभी रिजोल्व कर पाऊंगा अगर डीएनएस मेरी खुद की ऑन प्रेम में है या फिर इन हाउस डीएनएस मेरे पास है. इफ़ आई एम हैवी नॉट एनी काइंड ऑफ इन हाउस डीएनएस, अगर मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई डीएनएस अवेलेबल नहीं है, इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन फॉरवर्ड आवर ट्रैफिक टुवर्ड्स और एक्सटर्नल डीएनएस. एक्सटर्नल डीएनएस लाइक गूगल की डीएनएस हो सकती है, कोई भी ओपन सोर्स डीएनएस या फिर कोई भी ओपन डीएनएस हो सकती है. मेरी ट्रैफिक वहाँ जाएगी. जैसे आई एम लेट्स से दिस इज माय लोकल सिस्टम. आई एम फ्रॉम हियर, आई एम एक्सेसिंग www.facebook.com. Okay, first my traffic grow from my local network going towards a PA. Inside PA the traffic goes to the external DNS. So in external DNS it get IP address irrespective to the Facebook server. It get the IP address, let's say 8.8.8.8 IP address is the public IP address, this Facebook DNS Facebook server. Okay, then the traffic come to the PA, and PA check this 8.8.8 is nothing, this my local system, this is my local server. Then PA again translate my public IP to private IP towards your DMZ zone. So in earlier we are discussing in SNAT, we are changing the source, the process in which we are changing our source IP
फ्रॉम वन टू अनदर आईपी एड्रेस, दिस इज कॉल्ड सोर्स आईपी एड्रेस। तो ऐसी एक प्रोसेस जिसमें मेरी सोर्स आईपी एड्रेस में चेंज कर रहा था, दिस इज नथिंग बट योर सोर्स नेट, ओके, विच इज एनएस, नेटेड सोर्स। आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट एस नेट। एस नेट is nothing but is the process in which we are not changing our source address, we are changing our destination address. This is nothing but ND, netted destination. So this is your NB, netted ways. So in netted ways we are changing our source IP address as well as destination IP address. We are changing both source and destination. This things is actually called U-Turn NAT. Actually, the definition of U-Turn NAT is nothing like that. The definition is U-Turn. The definition for U-Turn NAT is like that: accessing my private services from public IP address. So basically, we are accessing our private services, like Facebook is a server. We are accessing our private services from public IP address. Okay, so without wasting any time, let's do the practical approaches very quickly. Okay. Okay, recording is on. So we are going to check, we are going to configure the DNS first. So let me configure the DNS. This is actually a ISO, this is a router ISO. Okay. Okay, that configure, host name is nothing but external DNS, interface is 100.0/0, IP address is like 100.0.0.100, 255, just because we are taking /24, no shit. Then IP DNS server. As the moment we are hitting this command, this server is router is become DNS server. Okay, IP host. Let's say the domain name is www.facebook.com. And what is the public IP address I am binding? I am binding the IP address is 11.11.11.11. This is the IP address. So simply I am just binding this IP address. And what is the IP address? Let me check. So www.facebook.com is binding with 11.11.11.11, and whenever any traffic hit to the 11.11.11, it translates their private IP address 192.168.80.100. Okay, this portion we are covering. Okay, let me check. So that's it. We are not doing anything else over here, and I have to create a static route towards to interface. Okay, Ethernet, then 100.0.0.1. Okay, that's it. Nothing else to do over here. Then click on OK. Then now open this particular internet router. Let me make it clear. So U-Turn NAT is little bit tricky but not so complex. Okay, if you understand the concept, how is actually why we are using U-Turn NAT, then it is very much helpful for you. Okay, and let's say this is interface E0/1, IP address 100.0.0.1, 255.255.255.0, no shut, interface E0/2, sorry, IP address 20.0.0.1, 255.0.0.0, again hitting no shut, Ethernet 0/0, IP address 113.0.0.2, 255.255.252, no shut, 2W. So that's the thing we are doing in this particular router. Okay, so now open this particular PC. Now start this PC. This is nothing but a host system. This is a Windows system actually. Now let's open. The window is starting. After we are configuring the IP address, and check whether we are able to resolve our website, which is www.facebook.com. This is nothing but your domain name. After turn on the system, we are checking whether we are accessing the DNS and whether we are able to resolve the domain name. Okay, the PC is about to start.
just take little bit time. Okay, now just open and run, click on OK, then ncpa.cpl. I think these are the basic thing which you know. Then go to properties, go to IPv4, use the following IP address, which is 20.0.0.20.0.0.1, and DNS is 100.0.0.100. This is the DNS. Yes, good. Click on OK, click on OK, click on close, click on restart letter, click on cancel. If you go again and go to CMD, if you have check ping 100.0.0.100, am I able to reach the DNS? Yes, I am able to reach the DNS. Am I able to resolve this particular domain? So ns lookup www.facebook.com. Yes, I am able to resolve. As you can check, there are non-authorized server and providing the IP address 11.11.11.11. So I am able to resolve this particular IP address. Okay, so that's the concept of routing. Normal, this is the concept of routing, nothing else. So now we are configuring the PA. So without wasting any time, let's access the PA and check without and do what necessary is actually required. Okay, admin. Okay, the PA is ready. So interface management. What is the IP address? This is the IP address, nothing else. So let's go and check. So I'm accessing my PA. Okay, this is the PA. So first we are configuring the IP address, like we are configuring the LAN interface IP address, WAN interface, DMZ interface. After that we are configuring the zones and making fast communication. Okay, let's check. So PA is about to start. ओके, सो फर्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, लाइक इथरनेट 1/1 के ऊपर 10.1, 1/2 के ऊपर 113.0.0.1 एंड इथरनेट 1/3 के ऊपर देयर आईपी एड्रेस 192.168. ओके, सो लेट्स क्लोज दिस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन एंड रिमाइंडर्स. लेट्स एक्सेस नेटवर्क सेक्शन. इथरनेट 1/2 is nothing but my WAN interface, या फिर you can say WAN zone. This is nothing but your layer 3 zone, and routing is nothing but virtual routing, or you can say default routing zone. I am creating a new zone, let's say internet zone. Okay, that's it. This is the internet zone, and what is the IP address for that particular interface, which is 113.0.0.1/24. This is the IP address, I guess. Yeah, then go to the add-ons and create a management profile. Let's create a management profile, and let's say global mgmt proff profile. Oh, here I am allowing only ping only. Okay, that's it. Click on OK. Okay, then after Ethernet 1/3, this is nothing but my DMZ zone. This is also a layer 3. This virtual router is nothing but a default router. Security zone, we have to create a security zone which name DMZ zone. Name you can take anything. Okay, this is user perspective, आपको जो चाहिए वो नाम आप ले सकते हो. 192.168.1/24 again. Then we have to call the management profile. So click on management profile, click on OK. Rest one is Ethernet 1/1. This is nothing but this is my LAN segment. So LAN zone. Okay, after that we have to create a layer 3 interface. This is nothing but your virtual default routing. We have to create again a LAN zone. Okay, click on OK. This is LAN zone. Advanced in profile we have to call the management profile. Okay, click on OK. So इसी के साथ हमारे जो इंटरफेस में जो IP कॉन्फ़िगरेशन की कॉन्सेप्ट थी, दिस इज डन. ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू गो कमिट. सो ये हमारी फर्स्ट कमिट हमने कहाँ पे किया, हमने IP कॉन्फ़िगरेशन कर दिया इन सब में.
we are committing first. So meanwhile I am configuring the IP address for that particular Facebook server. So IP 192.168.80.100/24 192.168.80.1. This is the IP address for that particular system, and I am configuring the DNS IP DNS 100.0.0.100. If you check, this is the DNS IP address. Okay, so let's check whether that commit is done or not. Commit is almost done. Okay, commit is almost done. If I am now trying to ping my gateway, I am able to reach my gateway. Okay, as you can see, I am able to reach my gateway, but still now I am not able to reach my DNS, just because there is a routing missing. So for routing we have to go to virtual router. In virtual router we have to create a static route. Actually static, you can say default route we have to create. Okay, go to virtual router, there is default, click on default, go to static, create a new route. Okay, let's say default. Okay, 0.0.0.0/0. This is special route, you can say. The interface is my WAN interface, Ethernet 1/2. Okay, IP address next hop is 113.0.0.2. Okay, this is the IP address. Okay, that's it. Click on OK, click on OK. Okay, that's it. Now we have to what we need to do, फर्स्ट मेरी जो पहली स्टेप रहेगी वो क्या करेगी, मैं डीएनएस के साथ कम्युनिकेशन करूँगा, ताकि मैं जैसे ही एनएस लुकअप लगा के आईपी रिजोल्व करूँगा मेरी, या फिर डोमेन को रिजोल्व करूँगा, मेरी डोमेन जो है facebook.com उसके रेस्पेक्टिव मुझे मेरी पब्लिक आईपी एड्रेस 11.11.11 मिलना चाहिए. Got it? So we have to make communication from LAN to WAN, and WAN पे किसके लिए बस करूँगा, मैं DNS के लिए ही ट्रैफिक भेजूँगा बस. ओके, so let's do it. So let's go to policy, let's go to NAT policy. First of all we have to create a SNAT policy. Okay, basically we are doing port address NAT overloading actually. So ट्रैफिक मेरी LAN से जाएगा, ट्रैफिक मेरी WAN को हिट करेगा. सोर्स एड्रेस इज नथिंग बट 10.0.0.0/8. ओके, डेस्टिनेशन आई डोंट नो द डेस्टिनेशन, एनीथिंग, इंटरनेट पे कुछ भी हो सकता है. डायनामिक में दिस इज द डायनामिक. इंटरफेस ट्रांसलेशन, इंटरफेस इज 1/2 which is my WAN interface. This is the IP address. Click on OK. After that go to policy, create a new policy. Let's say DNS policy. Okay, go to source मेरा क्या है, source is nothing but my LAN segment. Source address again we have source 10.0.0.0/8. okay, then destination is nothing. destination मेरा क्या है, मेरी destination में इंटरनेट, और एप्लीकेशन में मैं सिंपली यहाँ पे क्या रख दूंगा, दिस इज योर DNS. ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ मेरे DNS के लिए जाएगा. गॉट इट? और एक्शन मुझे अलाउ रखनी है, एक्शन में कुछ नहीं करना. दैट्स इट. ओके, क्लिक ऑन ओके, कमिट. So in earlier we are not able to reach internet DNS. Now if I just turn on that particular system, let's open. In backend the commit is working. Let's open this on the system. So this is U-Turn NAT is little bit important. Okay, so 1 2 3, that's why we are making this video, to make much more familiar to the U-Turn NAT. Okay, so let's go to this start button, click on run. ncpa.cpl, you know how to change the IP address. This Windows system, go to this properties, and after clicking properties there is IPv4. click on OK, click use the following IP address. Okay, I am clicking. Let's say 10.0.0.10.
10.0.0.1, and what is my DNS IP address? 100.0.0.100. This is my DNS IP address. Okay, click on OK, click on OK, click on OK, click on restart later. Okay, now go to CMD ping 10.0.0.1. I'm able to reach or not. Let's check. Okay, it's showing my destination host unreachable. Let me check what's the issue. Okay, here we are just missing to configure our IP address. Okay, these are the little things which you have to remember whenever you are doing in real environment works. Okay, like in production में आप firewall configure कर रहे हो, वहाँ पे आप IP भूल गए, is not like a very small thing, बहुत बड़ी चीज़ है वो. Okay, so we will go and check. After this commit, I am able to reach my gateway. Commit is just begin. It's 55%, 75%, 98. So now if you just go and check again, so now you are able to reach the gateway. Okay, now you are able to reach the gateway. As you can see now, I am able to reach the gateway. Okay, so am I able to reach the DNS? Let's check 100.0.0.100. Am I able to reach the DNS? Okay, so NI do lookup, NS lookup www.facebook.com. if you can go and hit enter, then you are able to look up. तो हम यहाँ पे लुकअप कर पा रहे हैं. देखो मुझे यहाँ पे IP एड्रेस मिल रहा है 11.11.11. So am I able to ping this particular IP domain? So no, I am not able to ping. So basically अभी तक हमने क्या किया? So अभी तक हमने ये किया कि हमारी जो कम्युनिकेशन थी, हमने LAN सबनेट से टूवर्ड्स DNS को हमने ट्रैफिक भेजा और DNS ने हमें क्या किया. तो बेसिकली यहाँ पे सोर्स IP एड्रेस क्या रहेगा? 10.0.0.10 एंड डेस्टिनेशन मेरी क्या रहेगी? 100.0.0.100. ओके, जैसे ही ट्रैफिक मेरी PA को हिट करेगा, PA क्या करेगा? मेरी सोर्स IP को चेंज कर देगा. सोर्स IP बिकम्स 113.0.0.1. डेस्टिनेशन रिमेन सेम 100.0.0.1. 0.100. Why? Because we are performing source NAT actually. Okay, then traffic go to DNS के पास ट्रैफिक कैसे पहुंचेगा? सोर्स IP 113.0.0.1, डेस्टिनेशन IP 100.0.0.100. ओके, जैसे ट्रैफिक ये भेजेगा, ये क्या रहेगा? सोर्स IP इज नथिंग बट 100.0.0.100. डेस्टिनेशन कौन रहेगा यहाँ पे? 113.0.0.1 यहाँ पे रहेगा. तो ट्रैफिक सेम कैसे आके PA के पास पहुंचेगा? PA इसे फिर से डीनेटिंग करेगा, सोर्स IP को फिर से कर देगा 10.0.0.10. डेस्टिनेशन रिमेन सेम विच इज 100.0.0.100. तो अभी तक यही है. ओके, तो जैसे अभी इसने ट्रैफिक भेजा तो ट्रैफिक DNS के पास पहुंचा. DNS ने मुझे रिजॉल्व करके मुझे IP दे दिया 11.11.11.11. अभी मुझे क्या करनी है? मुझे PA को बतानी है जो 11.11.11.IP है ना, ये मेरी लोकल सिस्टम, लोकल नेटवर्क में, मेरी DMZ में है. तो PA फिर क्या करेगा? 11 कोई भी ट्रैफिक जिसकी डेस्टिनेशन 11.11.11 रहेगी, PA उसे मूव कर देगा टूवर्ड्स योर फेसबुक, टूवर्ड्स योर प्राइवेट सर्वर. सो कैसे करेंगे हम उसको? सो इसके लिए सिंपल से हम करेंगे क्या? वी आर गोइंग टूवर्ड्स नैटिंग सेक्शन. हम पहले जाएंगे NAT के सेक्शन में. सो गो टू पॉलिसी, गो टू NAT. वी हैव टू क्रिएट जस्ट we have to create a U-Turn NAT. U-Turn policy. Okay, go to U-Turn policy, क्लिक ऑन. ट्रैफिक मेरी कहाँ से निकलेगा? ट्रैफिक मेरी LAN से निकलेगा. जाएगा कहाँ पे? ट्रैफिक मेरी जाएगा WAN पे, राइट? ट्रैफिक मेरी LAN से निकला. ट्रैफिक मेरी जा कहाँ रहा है? ट्रैफिक मेरी इंटरनेट पे जा रहा है. सोर्स एड्रेस मेरे पास क्या है? 10.0.0.0 विच इज /8. ओके,
एंड डेस्टिनेशन मेरे पास क्या है, डेस्टिनेशन आई नो 11.11.11.11.11, दिस इज द डेस्टिनेशन राइट। एंड मेरे जैसे ही डेस्टिनेशन 11 आएगा, डेस्टिनेशन को क्या कर दो तुम, चेंज कर दो, किस में चेंज कर दो, मेक इट बिकम माई प्राइवेट सर्वर विच इज 192.168.100। ओके, 192.168.100। कोई भी डेस्टिनेशन की आईपी एड्रेस अगर सोर्स कुछ भी रहे, डेस्टिनेशन अगर रह रहा है 11.11.11.11, इट बिकम्स 192.168.100। अगेन सोर्स को भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्यों सोर्स को चेंज करना पड़ेगा वो भी बता देता हूँ। जैसे ट्रैफिक आपका आ गया यहाँ तक, अभी तक हमने क्या कर दिया, मेरी सोर्स आईपी एड्रेस यहाँ पे 10.0. लेट मी ओके, अभी तक हमने देखा हमारी जो सोर्स आईपी थी, सोर्स आईपी 100. हमारी जो सोर्स आईपी थी इट 10.0.0.10 था। ओके, एंड डेस्टिनेशन मेरा क्या था, मैं पिंग कर रहा हूँ किसको, 11.11.11.11 को। ओके, 11.11.11.11 है, दिस इज द डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे जैसे आया, पीए ने क्या किया, पीए ने यूटर्न नेट को प्रीफर्म किया। यूटर्न नेट में उसने क्या किया था, हमने क्या किया यूटर्न नेट में, वी आर सिंपली सेइंग टू पीए whenever traffic with destination 11.11.11, कोई भी ट्रैफिक जिसकी डेस्टिनेशन 11.11.11 हो, उसकी डेस्टिनेशन को तुम चेंज कर दो, किस पे चेंज कर दो, उसकी डेस्टिनेशन को तुम चेंज कर दो 192.168.80.100 पे चेंज कर दो राइट। हमने ये चीज़ें बेसिकली पीए को बताया था। तो सेम थिंग अभी यहाँ पे पीए क्या करेगा, जैसे ही कोई ट्रैफिक मेरी आ रहा है डेस्टिनेशन 11.11.11 में, पीए उसे चेंज कर देगा, सोर्स आईपी रिमेन सेम 10.0.0.10, डेस्टिनेशन को पीए चेंज करेगा, डेस्टिनेशन मैक 192.168.80.100। गॉट इट। तो ट्रैफिक आपका यहाँ तक आ गया, मतलब ये प्राइवेट आईपी पे मुझे मिल गया। तो जैसे इसके पास ट्रैफिक आ गया, सोर्स कौन है, सोर्स है 10.10, डेस्टिनेशन कौन है, डेस्टिनेशन है खुद 192.168.80.100 है डेस्टिनेशन। इसने जैसे ट्रैफिक भेजा, रिवर्स ट्रैफिक भेजेगा होस्ट को, तो डेस्टिनेशन कौन रहेगा इसमें, 80.100 रहेगा, एंड सोर्स कौन रहेगा, सोर्स रहेगा 10.10। क्या मेरी जो डी एम जेड जोन और लैन जोन आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, देखो इन रियल एनवायरनमेंट डी एम जेड जोन और लैन जोन आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और इन दिस पर्टिकुलर लैब वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी, हमने कोई सिक्योरिटी पॉलिसी भी नहीं बनाया जिसके मदद से मेरी लैन और डी एम जेड आपस में बात कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सोर्स आईपी को भी चेंज करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, सोर्स आईपी को इसी रेंज की, इसकी इंटरफेस की आईपी को चेंज करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, इसकी सोर्स आईपी को सिंपली यहाँ पे चेंज करूँगा, यहाँ पे चेंज करूँगा विच इज़ 192.168.80.1, 192.168.80.1। जैसे ही पीए के पास ट्रैफिक पहुंचेगा, पीए फिर 80.1 को ट्रांसलेट करके 10.10 कर देगा। गॉट इट। अगर स्टिल हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेशन। ओके, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कहाँ पे क्या डाउट है, मैं सॉल्व कर आपकी क्वेरी की आंसर दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पे हमने ट्रांसलेट कर दिया डेस्टिनेशन को, अभी सोर्स को ट्रांसलेट करूँगा, तो सोर्स सिंपली मेरी कौन सी रहेगी, इथरनेट 1/3 को मैं पैट कर दूंगा। ओके, इथरनेट 1/3, दिस इज एंड दिस इज क्लिक ऑन ओके, दैट्स इट। यूटर्न नेट की हमने पॉलिसी बना दी। अभी सिंपली हमें जाके क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी भी नेटिंग की पॉलिसी तो हमने बना दी, अभी हमें नॉर्मल एक पॉलिसी बनानी है यूटर्न नेट की। ओके, यूटर्न नेट में मेरी सोर्स कौन रहेगा, अगेन सोर्स डेस्टिनेशन नेट अगर आपने सही से समझा होगा तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होती है। सो ट्रैफिक मेरी निकलेगा कहाँ से, ट्रैफिक मैंने निकलेगी लैन इंटरफेस से जाएगा। सोर्स एड्रेस क्या रहेगी, 10.0.0.8 रहेगा मेरा, दिस इज माई लैन सेगमेंट। डेस्टिनेशन कौन रहेगा मेरा, डेस्टिनेशन सिंपली मेरी डी एम जेड रहेगा, और डेस्टिनेशन की आईपी एड्रेस कौन रहेगा, 11.11.11.11. Why 11.11? Because this is called, because as I told you, this is called post NAT, this is called pre NAT. Okay, that's it, nothing else to do over here, and click on OK. और हमेशा ये चीज़ याद रखना, यूटर्न की जो पॉलिसी है वो टॉप में रहेगी, क्योंकि यूटर्न की मल्टीपल क्राइटेरिया आती है, यूटर्न हैविंग मल्टीपल क्राइटेरिया व्हिच यू हैव टू चेक। ओके, so let it make it over the SNAT. Okay, let me refresh this. Okay, now let's commit.
अर्लियर हमने देखा था वी आर नॉट एबल टू पिंग दिस पर्टिकुलर यूआरएल, हम इस यूआरएल को पिंग नहीं कर पा रहे. सो आफ्टर दिस कमेंट लेट्स चेक वेदर वी आर एबल टू पिंग दिस यूआरएल और नॉट. So commit is about to start. Okay, commit is almost done, guys. Okay, if I now check I am able to reach or not, let me. Okay, okay, I am able to ping now. I am able to ping. Okay, if you just same time if you just go inside PA, आप अगर PA के अंदर जाओगे और PA के अंदर अगर आप चेक करोगे ना कुछ source session all अगर आप चेक करोगे there is a net database. Let me again ping. Okay, if you just go and check this is nothing but PA session, just because PA is a stateful firewall. So पहले जो ट्रैफिक आया 10.0.0.10 से आया, दिस इज माई लैन सिस्टम. ये आया, इसने क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ, सोर्स एड्रेस क्या था 10.0.0.10, दिस इज द सोर्स पोर्ट, दिस इज द सोर्स जोन, लैंड जोन से ट्रैफिक आया, प्रोटोकॉल नंबर 7 में आया. एंड ट्रांसलेटेड किस में हो गया 13.0.113.0.0, बिकॉज इन फास्ट केस वी आर डूइंग सोर्स नेटिंग. हमने पहले क्या किया, सोर्स नेटिंग किया, सोर्स एड्रेस को उसने ट्रांसलेट किया. देखो डेस्टिनेशन को उसने छेड़ा भी नहीं, 100.0.0.100 100.0.0.100. आफ्टर दैट हमने डेस्टिनेशन को दोनों को चेंज किया, विच इज NB नेटेड बेस. इसमें क्या किया, ट्रैफिक मेरी 10.0.0.0 से आउट हुआ, उसको मैंने चेंज किया DMZ जोन की इंटरफेस की IP के ऊपर 192.168.80.1 के ऊपर. फिर मेरी जो डेस्टिनेशन IP एड्रेस थी 11.0.11.11.11, इट इज चेंज टू 192.168.80.100. ओके, दैट हाउ द कम्युनिकेशन इज पॉसिबल. फास्ट हमारी जो इनिशिएट रहेगी, हमारा डिवाइस पहले DNS से जाएगा, DNS से ट्रैफिक रिजोल्व करेगा या फिर IP रिजोल्व करेगा. फिर जब भी वो IP या फिर URL को वो पिंग करेगा, दिस URL इज एक्चुअली होस्टेड इनसाइड आवर प्राइवेट नेटवर्क. ओके, इनसाइड आवर प्राइवेट नेटवर्क में होस्टेड है, तो पब्लिक से प्राइवेट में आने के लिए हमें क्या पता है क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसलेट करनी पड़ेगी. देन वी आर चेंजिंग द IP एड्रेस. सो दैट्स हाउ वी आर डूइंग U-Turn NAT, guys. If you have any query related to U-Turn NAT, then let me know in the comment section. Okay, so that I can make. If you have if you have any doubt or any multiple, if I find multiple doubts, or if I see multiple comments related to U-Turn NAT, then I am absolutely create a differentiation which is deeply analyzes all the packet and deeply capturing all the packet and deeply analyzes the U-Turn NAT. Okay, thank you guys for joining this session.